कैट में अब सिर्फ 60 दिन रह गए हैं, 60 days to cat, and you could be in a position wherein you're feeling very demoralized and very sad कि अरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, और पहले तो ज्यादा नंबर आ रहे थे, अब तो कम होने शुरू हो गए, और maybe you're scoring well and you're excited about cat, and you need to know in either of the cases you need to know that hey, what should be my strategy to maximize the last 60 days amidst all the problems and challenges I'm having. Well, in this video my objective is to give you a 60-day cat strategy, how to crack cat into 2 months in 60 days, all the things you need, what are the days you need to follow, what should be the timetable which you should follow, and some of your biggest concerns addressed in this video. This video is going to be the only video you need to watch on your 2-month roadmap to cat. Hi, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher, and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. Now, सबसे पहली चीज इस वीडियो में मुझे क्लैरिफाई करना है कि ये वीडियो किसके लिए है. My dear friends, the target audience for this video are the aspirants who have already been preparing for CAT. Whether you've been preparing for CAT for just the last 15 days or 1 month or 6 months, I don't care, but this is for those who have been preparing for it. And this video is not for those who are looking for an answer to that, hey, if we start to study right now, then how should we go about it? For that, if you're somebody who's starting your prep right now, then you should go to my channel and watch a video on the 75-day CAT strategy, because us video mein I have made that video with a perspective that hey, if you're starting your prep right now, then what should be the exact roadmap you need to have. But this video is focusing more on aspirants preparing already, because why? Now in this video I'll not be speaking about miracles and जादू and जी कुछ भी हो सकता है कि 60 दिन में आप जीरो से स्क्रैच से शुरू करके आप शायद 99 परसेंटाइल लाके कुछ क्रेजी कर सकते हैं. नहीं, this video is more about improvement. This video is more about your mindset and giving you a structure in terms of a timetable so that you have a broad structure for each of your weeks in the next 60 days. Because my dear friends, the point is 60 days matter a lot. These last 60 days in the run up to CAT matter a lot. Your strategy needs to be good. Why? This is the answer to it, because now your focus needs to shift, and most students don't realize it. The reason why this video becomes a very important video for me to make is because while you've been a great student, आप बहुत अच्छे आज्ञाकारी सिंसियर स्टूडेंट रहे होंगे, आपने सब कुछ वो फॉलो करा होगा जो मैंने आज तक आपको कहा है, मैंने या किसी और ने भी, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है you don't know when to switch gears or shift gears. This is that point. These 60 days is that point, because now your focus needs to shift from concept building and concept practice to more match play, more match practice in terms of mocks. That is the first thing. And obviously when you're taking those mocks, your mock taking strategy, your test taking strategy needs to get solidified. Hello, one very important thing which I have to say to you. You and your friend could be preparing for CAT. आपने शायद आपके दोस्त से ज्यादा सवाल सॉल्व करे हो क्वांट में. उन्होंने अगर आज तक 500 सवाल सॉल्व करे, आपने 1000 सॉल्व करे हैं. उसने अगर आरसी हफ्ते में एक बार करी, आपने हर दिन आरसी सॉल्व करी, आपसे डीएलआर सब हो जाता है. मगर अगर आप उसको टाइम बाउंड मैनर में नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर टाइम बाउंड मैनर में कर भी पा रहे हैं, मगर एक मॉक सिचुएशन में, एक 2 घंटे के एग्जाम के सिचुएशन में आपको स्ट्रैटेजी मालूम नहीं है that how to handle the 2 hours and how do you maximize your score in those 2 hours, because there are test taking strategies, then I can guarantee you that friend might score more than you. Therefore, my dear friends, mock test is not just to check how much you're scoring. It's also for you to go back and see that okay, what should be my strategy, that with the same amount of knowledge which I have right now, can I increase my score by 5 to 7 to 8 percentile points or not? You can. You would realize एक मार्क से कितना फर्क हो जाता है. Moving on from there, अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है बहुत सिंपल. This is for those people who have been preparing for CAT, who have been scoring 80 percentile in mocks, 70 percentile in mocks, और अभी सवाल ये हो रहा है कि क्या ये मुश्किल होने वाला है, क्या यहाँ से अब एक 99 परसेंटाइल, एक 99 परसेंटाइल इन CAT, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल इन CAT लाना मुश्किल है क्या? वेल, इसको डेटा के साथ देख लेते हैं. डेटा क्या है? डेटा है परसेंटाइल वर्सेस स्कोर एनालिसिस, जो मैं अपनी हर वीडियो में देता ही हूं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच गिव्स यू पर्सपेक्टिव. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? Basis CAT 2023 data, this is what you need to know. I'll hide this thing for now. For an overall 99 percentile in CAT, you need a score of approximately 76 marks out of 198 marks, because 66 questions, 66 into 3 is 198, which effectively means for you to score a 76 marks, you need to get 25 questions net correct, because 25 into 3 is approximately or is 75. Hence, 25 questions out of 66 questions is the ask. Suddenly,
when you stop thinking it in terms of, oh, 99 percentile, oh, 98 percentile out of 100, which seems to be impossible at times, but when you see it like that, hey, 60 days, can I reach a point wherein I can score, say, or I can get, say, 20 to 25 to 27 questions correct? Or if my aim is not a 99 percentile, it's maybe a 95 percentile, maybe because I am a student of certain category, then for all I know, I need to get around 19 to 20 questions correct as per last year's data. And this data has been similar for CAT 2023, 22 and 21. Watch this in some of my other videos wherein I have showed it on a slide की कितनी similarities है कि लगभग 50% of the marks overall में लाके आप एक 99 percentile ला रहे हैं. Again, if I were to break this section wise, how? Now suppose करते हैं if you're somebody whose strength is in English, then probably these are the question arrangement of how many you need to get net correct in each section for you to achieve 25 questions correct. And in each of these combinations, so say for example, if you're somebody who's weak in quant but who's great in English, you can go as low as 5 questions net correct. Again, word of caution, this is not 5 questions attempt. 5 question attempt नहीं कह रहा हूं, 5 questions net correct होने चाहिए. मतलब अगर आपने ज्यादा सवाल सॉल्व करे हैं, उसके अंत तक 5 सवाल का इफेक्टिवली नेट करेक्ट होना चाहिए. डोंट मेक दिस मिस्टेक कि अरे आपने कहा था 5 सवाल ही करके आने हैं अगर मैं वीक हूं. नो, द पॉइंट इज इन ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, द वे आई हैव पिक्ड दीज कॉम्बिनेशंस इज सच दैट व्हाइल यू आर मीटिंग दिस 25 क्वेश्चन का लगभग क्राइटेरिया, यू आर आल्सो इंश्योरिंग दैट आपकी सेक्शनल परसेंटाइल्स भी क्लियर हो रही हैं. तो 5 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करके मतलब 15 मार्क्स इन क्यूए लाके आप हर आईएम की सेक्शनल परसेंटाइल भी क्लियर कर रहे हैं. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स व्हिच you would have heard it from me, from others, from other influencers, educators, coaching institutes, but ये दोहराना मेरे लिए जरूरी इसलिए है because मैं चाहता हूं आप 60 दिनों में ये अपने आप को दोहराएं. That my 2-month to CAT strategy, how to score a 99 percentile in CAT strategy, has to be built around this data, somewhat around this, because this is something which makes me feel that it is simple. Now, my dear friends, let me go down to breaking down what the 60-day structure has to be, and then, my dear friends, I'll be giving you a timetable, a week by week structure of what you need to follow, and you will realize that when I'll be giving you that timetable, which by the way I've given you in one more video already, you will realize that it follows this 30-20-10 structure which I'm suggesting to you right now. It will make sense, and therefore my submission to you is please like the video, subscribe to the channel. Why? There is a reason for that, because when you like it, when you'll subscribe to the channel, you will see more of me in your feed. In the last 60 days, it becomes important for your mindset to be right, your strategy to be correct, and also beyond that, it's about your interviews, about skill building, CV building, because MBA में जाते ही summer internship interviews and all of those things, you should see me more in your feed. Now coming back to this, see, your first 60 days, sorry, your first 30 days from today till the next 30 din has to be about identifying and plugging your gaps. Which means what? If you're still at the stage where your syllabus is not complete yet, please complete it ASAP. This should not go for beyond the next 15 days. आपको समय इकट्ठा करके खत्म ये करना होगा, because now this prep in the first 30 days onwards, in this last 60 days, your CAT preparation strategy has to be hinged around mocks. My submission to you is, if your syllabus is still yet to be completed, then take at least 2 mocks a week. But if you've completed your course already, अगर QA सब कर लिया, सब कुछ कर लिया है, तो आप 3 मॉक पर वीक पे आ सकते हैं. I will be explaining this strategy ahead when I'll be giving you the timetable. Secondly, this is now the time when you finalize your test taking strategy. I've said to you the importance of test taking strategies, that while you may have solved a lot of questions and while you might think that अरे यार last 60 दिन में भी बहुत सारे 1000 क्वेश्चन और कर लूंगा सॉल्व तो मेरा CAT परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा. नहीं, मैच प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हर बॉल को उसके मेरिट के हिसाब से कैसे खेलना है, हर क्वेश्चन को जज कैसे करना है कि अटेम्प्ट करने वाला है या नहीं, वो सिर्फ आपको टेस्ट देके ही आएगा. This is the time when you solidify your strategy for each section. I have spoken about this in one of my previous videos on how to increase your mock scores. That is about all the kind of different kind of test taking strategies which you can have. उस वीडियो में मैंने QA, DILR, VARC की टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज दी हुई हैं. मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, जिस भी एरियाज में अभी तक आपको समझ आया कि वीकनेस है, गेट बैक टू द बेसिक्स क्विकली, वाइंड दिस अप, प्लग द गैप्स. व्हेन आई एम सेइंग प्लग द गैप्स, आई मीन टू से दैट इन ऑलमोस्ट all the kind of questions, and now I'm talking about QA and DILR specifically, that whichever are even your areas of weakness, get to a point wherein you can ensure that you can solve at least L1 question. Which means what? आप suppose
सपोज कहते हैं कि यार ज्योमेट्री नहीं कर पाऊंगा, ज्योमेट्री के लिए अब समय नहीं है मेरे पास, या फिर ज्योमेट्री मुझे समझ नहीं आती है, मेरा आपसे सबमिशन ये है, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ज्योमेट्री एटलीस्ट इतनी कर लीजिए कि अगर उस पे L1 का बड़ा बेसिक सवाल अगर मॉक में या कैट में आता है तो आप एटलीस्ट वो कर पाए, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार ऐसा सवाल तो कुछ मैंने क्लास 10th में करा था, या फिर ये तो बहुत ईजी है यार, इसमें तो क्या ही था, ये तो मैं कर सकता था। ऐसा स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए द सजेशन इज व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय 75 day to CAT strategy video that ensure that you've scored or solved at least 25 to 30 to 50 L1 questions of each area। बहुत समय आप कर सकते हैं, अभी भी बहुत समय है, वो वाली चीज है यहाँ पे। Second, then moving on from there, the next 20 days is about more and more match practice, more and more analysis, because now you would have completed your syllabus। Last 30 दिन में कोई भी syllabus completion नहीं लेके जाना है, इसीलिए मैं शायद इतना नहीं सोचता हूं कि अब 60 दिन में if you are starting from scratch then you would be able to do great in it। I should not say this, but this is a fact, because you should be in that mindset that hey, now the time has to be for me to do match practice, and even if you're starting your CAT prep right now, get to match practice ASAP, which means what? Now take mocks in your actual CAT slot। You would have heard this from everywhere, this is important, please। Now also comes a very important thing called sectional tests, because अब आप एक उस स्टेज में होंगे जहां पे आपकी स्ट्रेंथ एरियाज काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, अब वहां पे आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मगर वीकनेस आपको बार बार बॉदर कर रही है कि यार बहुत वीक हूं मैं, बहुत वीक हूं मैं। अब सेक्शनल टेस्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज आपको वो उन वीकर एरियाज को मसाज करना है थोड़ा, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सकें अगर अभी भी समय है आपके पास, जो कि है। एंड ऑब्वियसली वीकर एरियाज में से जाके क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व कीजिए। राइट नाउ इट माइट बी साउंडिंग अ लॉट कि आप तो सब कुछ कह रहे हो, ये भी कीजिए जी, 3 मॉक भी दे दीजिए जी, L1 भी सॉल्व कर लीजिए, वीकर एरियाज भी कर लीजिए, सेक्शनल भी दे दीजिए, कब करना है, आप क्या बोल रहे हो सर? वेल हेलो, फॉर दैट ओनली आई एम सेइंग वेट अप टिल दिस पॉइंट वेयर आई गिव यू द टाइम टेबल ऑफ इट, व्हिच आई हैव गिवन यू इन वन मोर वीडियो, बट आई विल स्टेट दैट अगेन, बिकॉज हाउ आई हैव स्ट्रक्चर्ड ऑल ऑफ दीस थिंग्स इनटू योर वीकली schedule is what you would be amazed for। and if you're liking this video up till now, do not forget to like the video, subscribe to the channel। Moving on, last 10 days are going to be the chillest 10 days hopefully of your CAT prep। अगर आपने अभी तक बहुत ज्यादा चिल नहीं करा है और एक्चुअली हार्ड वर्क करा है, तो लास्ट 10 दिन आप डिजर्व करते हैं थोड़ा चिल करना, बिकॉज अब आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, एक माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना है कि अब लास्ट के 10 दिन में ऐसी कोई पढ़ाई मैं नहीं कर लूंगा, ऐसा कोई मॉक मैं नहीं दे लूंगा जिससे सडनली मेरा कैट स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि मैं अपने आप को मेंटली थोड़ा काम कर लूं, शांत कर लूं, ताकि जितना मैंने पढ़ा है, जितनी स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड करी है, उसके अनुसार मैं अपना मैक्सिमम दे पाऊं। एंड ऑब्वियसली यू हैव मी टू ब्रिंग यू मोर कंटेंट, मोर वीडियोस ऑन हाउ टू हेल्प यू। वन मोर थिंग आई लाइक टू से, go down in the description and find the link to my own Telegram group wherein students come and discuss their CAT prep strategies, their problems and challenges। I respond to all the queries with voice notes and long test answers, and it is my responsibility to take care of you, so do that, that is very important। Moving on from there, now let me come to the timetable aspect of it, and this timetable, my dear friends, again I'm saying this, would be the only timetable that you need to have for your CAT prep। Now see this again, I have split this into week wise, and I had made a video in the first week of September जिसमें मैंने ये सेम चीज दी थी वहां पे, and I am repeating this here because you have to follow the same thing। वो 75 day to CAT prep में जो आपने किया था ऑब्जर्व, वो सेम ही है यहाँ पे, just that now you need to see it from a 60-day perspective। Again, your week 1 to week 5, which means from right now till 13th of October, halfway into October, your objective has to be that hey, if you've not yet completed the syllabus, then you have to complete it very soon, very quickly, and you have to take 2 mocks per week along with it। The structure should somewhat look like this। Hello, day 1 has to be mock test, which is of 2 hours, followed by 2 hours of QA prep, 4-hour prep। See again, this has to be very clear to you, you have to spend some 4 hours or 5 hours each day now, you have to do that। अंत में आके नहीं है ऐसा, बट अभी आपको वो फाइट मारनी है। स्पेशली सी इफ you're somebody who's saying कि सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, ये वीकनेस है, तो अब तो मारोगे यार, कि अब भी नहीं मारोगे। सो प्लीज don't be frightened about 5 hours or like 6 hours or this and that। I have students who send me messages on my group saying that sir, I am ready to spend 10 hours 12 hours into my CAT prep, प्लीज गाइडेंस दे दीजिए क्या करना। कहाँ तो लोग 10 घंटे 12 घंटे देने को तैयार है, आपको 4-5 घंटे इज्जत से देने होंगे। मॉक टेस्ट कीजिए, उसके एंड में QA के सवाल करिए। मैं समझाऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं कि मैंने हर बार मॉक टेस्ट के बाद
बाद में 2 घंटे का क्यूए क्यों लगाया है? एक रीजन है, सीक्रेट है, बताऊंगा बाद में। उसके अगले दिन 6 घंटे का मॉक एनालिसिस करिए। आपको पूरा मॉक दोबारा सॉल्व करना है विदाउट सीइंग द सॉल्यूशंस। 6 घंटे लगेंगे बिकॉज आपको हर सेक्शन सॉल्व करने में, देखने में कि ये कैसे सॉल्व हो सकता था। 2 आवर चाहिए आपको फॉर श्योर। देन थर्ड डे DILR के सेट्स कर लीजिए, 4-5 सेट, 6 सेट्स इन 2 आवर्स। सेम वे VRC में RCs और VA के चंद सवाल कर लीजिए 2 आवर्स ईच। देन रिपीट दिस, दैट यू टेक अ मॉक टेस्ट फॉर 2 आवर्स एंड सॉल्व सम QA, एंड देन ऑन द 7th डे ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज द वीक, व्हिच मींस फॉर्मूलाज हर हफ्ते रिवाइज करने हैं। I am sure that you have a formula sheet which you have made. If not, then you can find it anywhere online. And also, while you are solving these questions and mock taking, I hope you are also making notes of some important questions which you are like, यार ये क्वेश्चन पहले नहीं करा बट ये इंटरेस्टिंग है, या मुझे समझ में आ गया है। Then you have to bookmark those questions while you are solving them, and then Sunday or that 7th day is the day where you are revising those questions. This, my dear friends, is your strategy for the 30 days. I have said to you कि मैंने mock test के बाद QA क्यों यहाँ पे करा है, because again I am solving one more big problem for you. A lot of students they come to me and that say that sir mock test में ना stamina खत्म हो जाता है, लास्ट तक आते आते ना सर मन नहीं करता, QA ठीक से नहीं होती। भाई हेलो, स्टैमिना प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉब्लम और उसका उपाय ये है कि stretch your hours. Immediately after you finish a 2-hour mock, start solving some QA questions. I would in fact advise you start a sectional test on QA. That will ensure that now you are preparing yourself not for 2 hours but maybe for 2 hours and 20 minutes, or for maybe for even for 3 hours. Suddenly if you were to peak earlier in your 2 hours, now you will shift your peak more towards the QA side. That is one strategy which I've always advised to my students. Moving on from there, now I'll quickly explain to you that once you are done with mid October to mid November, shift the gear, go to 3 mocks per week, because now it's all about taking mock test, match practice coupled with revision of weak areas, because weakness तब तक भी रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे I'm simply saying that every alternate day you have to take a mock test, and on the mock test day revise the area which you still feel is weak. तो अभी तक भी अगर आप ये सोच रहे थे कि नहीं सर अभी तो सिलेबस भी हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो वीक एरियाज बचे, भाई मैंने इसमें अकोमोडेट भी कर दिया कि आप लास्ट तक भी अपने वीक एरियाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉलो दिस इज वेल थॉट आउट। कीप प्रैक्टिसिंग योर वीक एरियाज इफ यू फील, एंड देन डू अ मॉक एनालिसिस. द मॉक एनालिसिस will help you strengthen your strengths and making your weaknesses strong enough that you can crack the sectionals in that. Then between these 2 full length tests, I am saying that on this date, on the 3rd day, either you can take a full length mock, or if you have a real problem in one of the areas, then you can take a sectional test as well. And उसके ही according अगर आपने full length दिया है mock तो full length का analysis कर लेना, अगर ये दिया है तो sectional के साथ साथ थोड़ा revision कर लेना. But if you see, this is more about taking the mock tests. In fact, even on the 7th day, I am saying that because some of you or a lot of you might be also having your NMAT, which you would have scheduled sometime in this window only from 14th October to 17th. Therefore, 1 or 2 mock tests, or at least 2 or 3 mock tests of NMAT are important if you're serious about it, which you should be. And again, revision of the week, of your weaker areas, of the formulas and everything, all of that is important. Please take a screenshot of this. If you haven't, I'll open it again. That's that. Now finally, once you've moved in the last week is about chilling. Last week at max solve 2 mocks. These mocks are not about कितना score आया, हो सकता है उन mocks में आपका 75 percentile ले आओ, for all you know. It's not about that. Those mocks are only so that you do not cool down. आप match practice में रहो. Your mind, your hands are still warm, working. That's that. Revise all your notes, all your questions, important questions जो भी थे. Sleep cycle correct कर लीजिए. मुझे पता है आपकी, हमारी सबकी sleep cycle बहुत खराब है, वो ठीक करने का समय है. Enjoy, and जो भी stressful चीजें हैं, it could be your job, take a break from it. It could be something around you, कोई friendships breakup हो गया, वो उससे एक हफ्ते के लिए pause कर दीजिए. If you have to block somebody for a week, block that. Obviously it should not harm your equation with them, but do all of the things which will ensure that it is important for you. Keep your people and friends informed कि भाई last week है, जरूरी है मेरे लिए. Cat day, my dear friends, one advice I've given in the last video as well, in this video again I'll give, that please be indifferent. The problem with the cat industry and all of us, the educators, influencers, is that because we've done so much of cat, इतना cat कर दिया है कि now we've made it to be the biggest event of the year. It should not be like that. While it is in some sense कि यार हर IIM का वहां से निकल
चल रहा है ये वो है भैया, मगर जीतते वो हैं जो कैट डे पे इतना प्रेशर नहीं लेते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि कैट है, कर लेंगे, बहुत एग्जाम्स दिए हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं लाइक MS धोनी, एंड दे आर एबल टू डू वेल. ट्रस्ट योरसेल्फ बिकॉज यू हैव डन रियली वेल. जितनी भी प्रेप करी है उससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं. आई हैव गिवन यू हाउ मच स्कोर्स यू नीड, बहुत नहीं है. इफ यू सी दैट इट्स नॉट एन एग्जाम वेयर यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, एंड जब तक 99 मार्क्स नहीं आते तब तक आपका कहीं नहीं होगा. नो, दिस इज नॉट अ DU के एंट्रेंस जब होते थे एक समय. नो, दिस इज कैट, दिस इज परसेंटाइल, नॉट मार्क्स. एंड अगेन आई एम सजेस्टिंग ऑन द कैट डे, थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट. हे यू नो व्हाट, दैट है यार, XLRI टॉप 4 टॉप 5 कॉलेज है, क्यों नहीं जाए यार दैट में, विल डू इट वेल. वंस यू हैव टेकन द पावर अवे फ्रॉम कैट, फ्रॉम दैट eventful day, you suddenly realize you'll perform much better. And I've shared my story of how similarly I was very weak in all the areas, but I yet scored a 98.3 in that. The fact is, my dear friends, this is what you needed to know for your thing. One more interesting thing now is that I know there are students around me in my community who ask me, who have certain very big issues. The top 5 are these, that sir, I'm still scoring 80 percentile aa rahi hai CAT mein, I'm still scoring 80 percentile in CAT mocks, what should I do? Your concern could be that, sir, suddenly my performance in mocks have started to dip, my god, I'm scared. Or maybe it could be specific to VRC, that sir, still not able to understand VRC में यार RC सर समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, मैं नहीं कर. Or it could be specific to QA कि सर बहुत स्लो हूं, सर सवाल सॉल्व ही नहीं होता, सर वो 2 मिनट एंड वो 3 मिनट पर क्वेश्चन का फंडा मुझे समझ नहीं आता, सर नहीं हो रहा मेरे से. और मे बी सर DILR, सर 20 मिनट हाफ एन आवर में तो एक सेट सॉल्व कर रहा हूं मैं, कहां से मैं 2-3 सेट कर लूंगा. इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम है, मैंने दिखा इसलिए दिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. आई नो आपको ये है प्रॉब्लम. अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है, व्हाट आई वांट यू टू डू इज लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यस देयर इज अ प्रॉब्लम इन दीज एरियाज. शेयर विद मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज, एंड इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दीज, देन शेयर इट ऑल्सो, बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी addressing these problems, that what should be your mindset to solve these problems, maybe a bit of strategy and everything around these problems, and I'll ensure that I cover all the things which you want me to cover in that video. My dear friends, my objective in this video was to again recalibrate you to what you should do in your 60 days, what could be your guideline, your roadmap, your 60 day, your 2-month to CAT strategy by an educator who's not trying to tell you that hey, you could do this and you could do this. No, it's more about your schedule, your discipline, and how much hard work you put in, and a bit of smart work. My dear friends, I hope this made sense to you. I hope this was something which inspired to you, which inspired you and made you think कि हाँ यार ये आसान है, कर सकते हैं, अभी भी हताश होने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपके. Do not forget to like the video, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Thanks a lot. Goodbye.